A is guilty of, तो यहां पर entrustment की बात हुई है, तो therefore he will be guilty for breach of trust, right? Therefore he will be guilty for breach of trust, right? Breach of trust, or breach of trust, criminal breach of trust is given under section 405, जिसकी punishment दे रखी है 406 में, right? Criminal misappropriation is given under section 403, right? Criminal misappropriation जहां later on आपकी intention dishonest हुई, right? Cheating, theft, theft 378 में डिफाइन है, 379 में इसकी पनिशमेंट है जो कि 3 साल तक की है. सो यू हैव टू रिमेंबर द पनिशमेंट एज वेल. ठीक है. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? My name is Gaurav Mahindra, and today we are going to analyze UPPCSJ 2018 preliminary exam, right, which was held on 16th December 2018. All right, so now let us start. See, this video will be in different parts, right? I will be analyzing, I will be telling you each and every options that why this is correct and why this is wrong, कि ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है. ठीक है, तो शायद इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, and this video will be in different several parts. Okay, so I have decided that I will be taking first criminal law, that is CRPC, IPC, and evidence. So in this video I will be taking these three subjects and these three questions. ठीक है. All right, so now let us start. देखो मैंने इसमें एनालाइज करा है और आईपीसी के स्टार्ट हो रहे हैं सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 51 तक. So now let us first read section 37, what they are saying. Okay, section 37. So it is here. Okay, so they start that the Criminal Law Amendment Act 2018 comes in force into force from. So as you can see that it is 21st April 2018. So it came into force on 21st April 2018. But when did the President of India give the assent, right? So India, President of India ने कब इसको assent दिया? So President of India has given an assent on 11th of August 2018. ठीक है? So there you can see that there is a slight retrospectivity which is given to this criminal amendment, criminal law amendment act 2018. तो ये आया था 21 अप्रैल से इफेक्ट में, बट इसको एसेंट दिया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑन 11th of August. ठीक है. ऑल राइट. Now next question, it says that in case of criminal misappropriation, subsequent intention मतलब कि आगे आपकी इंटेंशन कैसी थी. क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में आपकी स्टार्टिंग में इंटेंशन वाज ओके, राइट? व्हेन एट द टाइम यू टुक और यू टेक दैट ऑब्जेक्ट, आपकी इंटेंशन वाज नॉट रॉन्गफुल, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी आपकी, बट लेटर ऑन आपने अपनी इंटेंशन आपकी डिसऑनेस्ट हुई, राइट? दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर, डिसऑनेस्ट, राइट? अब देखो डिसऑनेस्ट क्या होता है. डिसऑनेस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी. ठीक है. डिसऑनेस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी. फ्रॉडुलेंट कहां पे डिफाइंड है? फ्रॉडुलेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 25 आईपीसी, राइट? एंड इलीगल इज गिवन अंडर सेक्शन 43. बट इलीगल में देखो तीन चीजें हैं which you should remember. That illegal is what? That what is an offense under IPC, and what is prohibited by law. Prohibited by law means that which is prohibited by different statutes. For example, Dowry Prohibition Act, for example, SC and ST Atrocities Act, right? Those are also part of the criminal law. So prohibited by law, it is under different statutes. And the third part is that is which gives ground for civil action. So in illegal, there are three parts: offense, prohibited by law, and which gives ground for civil action. Okay? So do remember this. This is also very important. Illegal is defined under section 43 of IPC. Okay, now let us proceed further. Next question says that the doctrine of joint liability. अब देखो joint liability की बात कर रहे हैं, as envisaged by section 34 of the Indian Penal Code. सेक्शन 34 जैसे आपको पढ़ के पता चल गया होगा, ये बात कर रहे हैं कॉमन इंटेंशन की, जॉइंट लाइबिलिटी की. दैट मींस कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, है ना? ये कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं. कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, राइट?
So the doctrine of joint liability as envisaged by section 34 of the IPC is based on the decision of the following. So the correct answer is Reg versus Cruz. This is the correct answer. Okay, right? Now further if you read, it says that which of the following combinations are correctly matched. अब देखो ये हार्बर कहाँ पे डिफाइंड हो रखा है? Section 51 talks about oath, right? Section 52 talks about harbor. Not 52, rather 52 is talking about the good faith, right? Okay, harbor is given under section 52A. Yes, the harbor is defined under section 52A. Okay, now अब देखो इसमें लिखा हुआ है wrongful loss. तो wrongful loss तो section 23 में ही दे रखा है. wrongful loss and wrongful gain, right? section 23 में ही defined है wrongful loss and wrongful gain, right? जो चीज आप you are not entitled to gain, if you are not entitled to that property और अगर आप उसको gain कर रहे हो, so that is wrongful gain. ठीक है? All right. Gang rape on a woman under 12 years of age, that is section 376 DB. Okay, that is also correct. Now gang rape under section 376 D, that is also correct. So the correct answer is that which of the following combinations are correctly matched is 2, 3 and 4. So the correct answer is C, right? 2, 3 and 4. Now let us proceed to the next question, that says that which of the following is not correctly matched. अब यहाँ पे देखो इन्होंने ऑप्शंस में क्या डाला हुआ है. इन दिस ऑप्शन दे आर गिवन दैट नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्शन 498A. सो सेक्शन 498A तो क्रूअल्टी की बात करता है, राइट? सेक्शन 498A तो क्रूअल्टी की बात करता है, whereas नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज द केस रिलेटेड टू व्हाट? That is a case related to section 377, right? LGBT, Navteej Singh Johar versus Union of India. ठीक है? Okay, now Navteej Singh Johar से पहले एक और केस लॉ आया था. You please write down in the comment कि कौन सा केस लॉ था और उससे पहले एक और कौन सा था, right? Shall I give you the hint? It was इससे पहले वाला, उससे पहले वाला एक था नाज फाउंडेशन. ठीक है? नाज फाउंडेशन के बाद एक और आया जहां पर इसको हटा दिया गया था और बोला दैट इट इज एन ऑफेंस. फिर ये नवतेज सिंह जौहर केस आया. ठीक है? सो प्लीज टेल मी इन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सा वो केस लॉ है, इससे पहले वाला कौन सा था और कौन से जज ने दिया था. ठीक है? राइट. नाउ लेट अस रीड फर्दर. Section not section question 42 says that consider the following cases and arrange them in a chronicle order. अब देखो ये बोल रहे हैं जो सबसे पहले आया था वो उसको पहले अरेंज करो. ऐसे क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन यूपी. ठीक है? इट सेज दैट जोसेफ डब्ल्यू कल्याणी वर्सेस स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जोसेफ शाइन वी रेवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब देखो ये सारे केसेस रिलेटेड है एडल्ट्री के. एडल्ट्री, ओके, एडल्ट्री was an offense earlier, right? Under section 497, adultery was an offense under section 497, right? तो यहाँ पर this was the first case, Yusuf Abdul Aziz versus State of Bombay, right? This was the first case. And उसके बाद this यूसुफ अब्दुल अजीज ये आया था 1954 में. ये आया था 1954 में. उसके बाद वी रेवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये आया था 1988 में. ओके. और डब्ल्यू कल्याणी वर्सेस स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर ये आया था 2011 में. और जोसेफ शाइन दैट वाज अंडर इन 2018. बट व्हाट वाज द डेट? You please tell me what was the date. Write down in the comment box the date, the Joseph Shine versus Union of India. Okay, let me give you a hint. It is in September 2018. You please write down the date in the comment box. Okay, so the correct answer is B. The correct answer is B. All right, now let us move to the next question, that is, in which of the following cases the Supreme Court has remarked that husband is not the master of the wife? Husband is not the master of the wife. So
This is also related to adultery. ये केस था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट. यहां पर बोला गया था कि हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ द वाइफ. ठीक है, इज इट क्लियर? ऑलराइट. और अगर आप दूसरे ऑप्शन देखोगे, यहाँ लिखा है सरला मुदगल प्रेसिडेंट कल्याणी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो ये केस था सेकंड मैरिज बाय कन्वर्जन. ओके, सेकंड मैरिज बाय कन्वर्जन. तो यहाँ हिंदू से आप मुस्लिम में कन्वर्ट हुए और वहां पर आपने सेकंड मैरिज करी. ठीक है. और लिली थॉमस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट. इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कन्वर्जन. यहाँ पे नॉन मुस्लिम थे और यहाँ पे आपने सेकंड मैरिज करी. कैलाश सिंह इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट ओनली. ठीक है, सेकंड मैरिज. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए विद इंटेंट टू मर्डर एंड एडमिनिस्टर. A with intent to murder administered a fatal dose of poison to Z. ठीक है. And then while Z was still alive, a stranger B without A's knowledge attacked Z and shot him dead. तो यहां पर A की क्या लाइबिलिटी होगी? यहां पे देखो क्या लिखा है, A with intention. उसकी इंटेंशन तो थी मर्डर करने की, उसने पॉइजन भी डाला जेड के लिए, एंड देन जेड वाज स्टिल अलाइव. तो मर्डर किया तो एक्टस रियस कंप्लीट हुआ नहीं. व्हाट इज द एक्टस रियस? एक्टस रियस इज दैट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ. ठीक है. तो यहां पर उसने पॉइजन दिया बट ही वाज स्टिल अलाइव. बट वहां पर कोई एक और व्यक्ति था जिसने उसको एक ही शॉट हिम डेड, राइट. तो यहाँ पर A will be charged for attempt to murder and the other person will be charged for the murder. So the correct answer is C. A would be guilty of an attempt to murder and B would be guilty for murder. ठीक है? Is it clear? Now let us read the next 48. That a police officer tortures Z in order to induce Z to confess that he committed a crime. Now A is guilty of an offense what? कि आप उसको टॉर्चर कर रहे हो और उससे कन्फेशन ले रहे हो. तो that is given under section 330, right? That is given under section 330. अब 330 क्या कहता है? It says that you have voluntarily caused a hurt in order to obtain the confession. ठीक है. But 331 क्या कहता है? 331 talks about that you have caused grievous hurt in order to obtain the confession. Okay, is it clear? Whereas 326 क्या कहता है? 326 that you have caused voluntary grievous hurt by dangerous weapon. Whereas section 325, that is a punishment for voluntary causing grievous hurt. 326 by dangerous weapon, voluntary causing grievous hurt by dangerous weapon. Whereas section 330, आपने voluntary hurt तो करा to obtain confession. So A जो police officer है, he will be charged for 330. ठीक है. This is very important and this was asked many times. बहुत बार repeat हुआ है. ठीक है. Now it says, now the next question is that A who has entrusted. अब देखो यहाँ entrusted की बात हुई है. Entrusted by B with a certain blocks for printing a catalog, prints catalog of rivals firm with the same block. A is guilty of. तो यहाँ पर entrustment की बात हुई है, तो therefore he will be guilty for breach of trust, right? Therefore he will be guilty for breach of trust, right? Breach of trust. और breach of trust, criminal breach of trust is given under section 405, जिसकी punishment दे रखी है 406 में, right? Criminal misappropriation is given under section 403, right? Criminal misappropriation जहां later on आपकी intention dishonest हुई, right? Cheating, theft 378 में डिफाइन है, 379 में इसकी पनिशमेंट है जो कि 3 साल तक की है. सो यू हैव टू रिमेंबर द पनिशमेंट एज वेल. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 47. It says that disclosure of identity of a victim of rape is punishable
अंडर सेक्शन व्हाट? सो 376D तो आपका गैंग रेप की बात करता है, 376E आपका this is talking about the repeat, right? And 228A is talking about that when you reveal the identity of a victim. 228A, ठीक है? Is it clear? Let me tell you one more point in this. In this 228A, write down the case law, that is Lalit Yadav versus state of Chandigarh. State of Chandigarh. That is, just wait. State of Chandigarh, 2018. Okay, 2018. 48. Now, no right of a private defense of property is available against the offense of, options देखो, criminal breach of trust, theft, robbery, trespass. So the यहाँ पर बोल रहे हैं private defense of property is available against the offense of, so it is only available in the case of this criminal breach of trust. Okay, there is no right to private defense in case of criminal breach of trust, but in case of theft, robbery and criminal trespass, you have a right to private defense. Okay, you have the right to private defense in case of theft, robbery and criminal trespass, because over here it is a situation of urgency. यहाँ urgency की situation है, ठीक है? Now further it says that match the following. अब यहाँ आपको मैच करना है, delivery of property, B taking of property, C entrustment of property, D convertibility of property got innocently to one's own use. अब आपको यहाँ पे पता और चल रहा होगा, एक बार इसके लिस्ट 2 भी देख लो, that says criminal breach of trust, criminal misappropriation, theft and extortion. अब delivery of property तो आपका extortion में होगा, right? क्योंकि that is the actus reus, कि एक बार अगर डिलीवरी हो जाएगी तो माना जाएगा एक्सटॉर्ट हो गया, right? Now taking of property is a part of theft. Once you move the object, it will amount to theft. Okay, so moving the object is the actus reus for theft. Now entrustment तो आ गया, तो फिर entrustment is given under section 405 criminal breach of trust, so that is criminal breach of trust. And convertibility of property got innocently to one's own use, that is criminal breach of criminal misappropriation, that you have misappropriate such property, ठीक है, right? अब देखो इसकी आपको पनिशमेंट भी आपको याद होनी चाहिए. एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट इज what? That is 3 years or fine, right? Theft की punishment is 3 years or fine, right? But criminal breach of trust की punishment क्या है? Tell me, criminal breach of trust की punishment आप ये लिख के रखना, ठीक है? आप इसको जो है do write it down in the comment box. Criminal breach of trust की punishment क्या है? Do write down in the comment box. Okay, right? And under which section it is given, that is, चलिए मैं बता दूं, that is 406 में दे रखा है. But what is the punishment? ठीक है, now let us proceed further. Okay, next question दे रखा है, voyeurism is defined under which section of the IPC? तो voyeurism is defined under section 354C, right? ये भी बहुत important question है. अब A में क्या है? 354A. 354A talks about, that is harassment, right? Harassment. And section 354B talks about disrobing, right? 354B talks about disrobing. 354D talks about stalking, right? So this is also very important. Okay, next question. In which case the Supreme Court unanimously ruled that individual autonomy and intimacy and identity are protected under fundamental rights? तो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन, कैसल रॉक वर्सेस गोंजालेस. सो दैट इज द करेक्ट आंसर इज ए, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट? अब ये नवतेज सिंह जौहर
versus Union of India, this came on which date? So it is on 6th of September 2018. Delivered by whom? Tell me. Delivered by whom? किसने deliver करा ये judgment? He was the Chief Justice at that point of time. He was the Chief Justice at that point of time. Tell me. Write down in the comment box. Okay. Now next. Okay, अब तो यहाँ पे IPC के ओवर हो गए. अब देखते हैं. अब next I believe this was the IPC. Now let us start with the CRPC. So CRPC का दे रखा है section not section question 93 to 107. 93 to 107. Just wait. 93 to 107. Here it is. अच्छा देखो अभी ये सेक्शन 93 में क्या कह रहे हैं? They are asking the chief judicial magistrate competency कि कितना वो punishment दे सकता है, right? How much punishment he can give. So that is the 7 years. वो 7 years तक दे सकता है, right? और judicial magistrate first class कितना दे सकता है? That is 3 years or fine, that is 10,000, right? But judicial magistrate second class कितना दे सकता है? You kindly write down in the comment box. Judicial magistrate second class, right? All right. So 7 years CGM दे सकता है, 3 year judicial magistrate first class दे सकता है, second class कितना देगा? You please answer this. ठीक है? So that is the correct answer is C. That sentence of imprisonment for a term up to 7 years, right? Now next section 90, next question 94. That which of the following is not correctly matched? Now complaint. अब यहाँ लिखे not correctly matched. Okay, not correctly matched. Complaint section 2D. Section 2D में complaint define हो रखी है. Police report section 2R. Section 2R में complaint police report define हो रखा है. Police report section 173 में भी देते हैं, right? जब भी police officer investigation complete करेगा, तो he will have to file the police report, and that police report will be in the nature of the charge sheet or in the nature of a closure report, right? ठीक है? So that is 173. ठीक है? So now next लिखा हुआ है contents of a judgment section 354. So that is also correct. Contents of judgment is given under section 354, and it is not only the contents but language and content of judgment is given under section 354, right? Next they are saying that victim compensation scheme section 357. No, that is incorrect, because section 357 talks about what? It is talking about order to pay compensation. Order to pay compensation. Order to pay compensation. All right. Whereas section 357A talks about victim compensation scheme. ठीक है? 357A talks about victim compensation scheme. So now let us read section question 95. It says that a criminal